Let's go. We out. Oh, what happened to his gun? If I was in that circumstance, would I act any different? Cinema Mosaic. Hey, what's going on? It's your boy Sintel with the Intel. Guns and GULAABS, episode 4. Thank you all so much for supporting the channel. Cinema Mosaic, absolutely. Thanks you. So without any further ado, let's get started. Thank you, Netflix. All right, so last episode was pretty good. You know, we had a gang boss try to fake a murder and accidentally murder somebody. I'll see how that all unfolds. Oh, speak of the devil, it's him. Come on, man. Everybody wants to be a gangster till it's time to be a gangster. Yeah, and on top of that, you ain't got nobody to treat your pops. Yo, he be putting mad pressure on her in front of her husband. That's crazy to me. The disrespect. That's gotta come to a head sometime soon, right? शायद उस वक्त तुम अपने पापा जी के बारे में सोच रहे थे तो तुमसे ये गलती हो गई। Nah, man. पुलिस का कोई टेंशन नहीं है, उसको मैं संभाल लूंगा। Can't worry about the police. What is it? Just a spirit, a soul? पापा आईसीयू में, घर भी पूरा खाली खाली है। दोस्त भी सिर्फ तुम। How is he your friend and you macking on his woman like that? चलूं मतलब कहाँ? घर सब कुछ है वहाँ पे। टीवी देखेंगे, बिरयानी खाएंगे, कॉलेज के दिनों की तरह। Come on, man. My dude is married. मैं उसको मना लूंगा, टेंशन मत लो। आने दो उसको। Don't do that, bro. I feel so bad for him because it's not much he can do, man. You know, this dude is a powerful guy now, and slighting him could end bad. But then again, that's your wife. Whew, it's a bad situation to be in. इसी लाइन की बात कर रहे थे तुम? हाँ सर, कुछ साल पहले यहाँ के ढाबे के मालिक ने ये लाइन बीच में खिलवा दी थी। इस साइड गुलाबगंज और वहाँ शेर। Oh, okay, so that's the bar that all the rival gangs go to. Yeah. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। Get a Nobel Prize. ढाबे के मालिक को मोटा नोबेल पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, नहीं सर? 2 rival gangs eating peacefully, huh? से देख, ये नया नारकोटिक्स वाला। पुलिस में होने का रोब भी अलग है। क्या गुलाबगंज, क्या शेरपुर, जहाँ चाहे कूला टिका दो। Yeah, I mean, you know, it's good to be the boss. और एक कैंपर। It's like the first time him and Tipu actually looked at each other, huh? पर ये जो कैंपा पी रहा ना ये नया, पहले मैकेनिक हुआ करता था, फिर अब कुछ टाइम पहले से ये गांची गैंग के लिए काम कर रहा है। ये देखने में भोला लग रहा है सर, अब पागल आदमी। पाने से? स्क्रू ड्राइवर होगा। सर पाने से? कोई किसी को पाने से कैसे Hey, Tipu leaning in though. He's like, yeah, man, I'm that dude. I really am that dude. Like, it's in the blood. तेरी गांड में गुता नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अबे तूने अलग मौत का कुआं खोल रखा है। सोचने दे, थोड़ा टाइम दे। और ऐसे घूरे मत, तेरा सीनियर हूँ। कभी सुन लिया अगर मेरी भी। Dang. And look where he's standing over you too, senior or not. मैंने कहा था सर, बहुत बढ़िया है। सर एक बात पूछूं? आप यहाँ सफाई अभियान पे आए हैं ना? मतलब इन गैंग्स का सफाई करने? My man looked nervous when he said it. सर कुछ टाइम पहले गांची साहब की एक बहुत बड़ी डील पक्की हुई है सुकांतों के साथ। कलकत्ता का एक पावरफुल ड्रग माफिया सुकांतो उन्हीं के लिए काम करता है। गांची भाई साहब की सबसे बड़ी डील होगी आज तक की, और नवीद भी इसलिए हरकत में इस वक्त, क्योंकि वो जानता ही। Yep. अच्छा राम प्रसाद, शेरपुर, गुलाबगंज और आसपास के सभी इलाकों में जितने भी किसान गैर कानूनी रूप से अफीम उगा रहे हैं, उन सब की एक लिस्ट बना के मुझे दो। Oh, he about to disrupt some stuff. कल ही हाजिर हो जाएगी सर। वैसे अपना प्लान क्या है? उनको जाके हेलो बोलेंगे। I don't know if that's gonna work well. We'll see. We'll see. Tipu, man, that dude's made such a change. I mean, obviously, it makes for more interesting storytelling if he, you know, he turns to the dark side and inherits his father's wrath and all that good stuff.
Deal or no deal? चल क्या रहा है महेंद्र भाई? हैं? जो डॉक्टर भाई साहब का इलाज कर रहा था उसे ही मार दिया। अरे वो तो गलती से हो गया। साले तुम चुप रहो। I ain't trying to hear none of that, man. तो मैं बस बधाई हो भैया कहा था। दबाओ साले यहाँ से। निकलो, निकलो। हलवा है क्या? कभी भी कोई भी किसी को भी टपका के आ जाएगा और कहेगा, सुनिए मिश्रा जी, देखिएगा कि कहीं पुलिस केस ना हो। I mean, he is the boss. दिमाग चलना बंद हो गया था क्या? शांत शांत क्या? थोड़ा क्या सोच क्या रहे थे? अगर पापा यहाँ खड़े होते तो आप हमसे ऐसे बात कर रहे होते? That's a good point to ask. I mean, even though he's wrong, he is right about that. Like, yo, watch how you talk to me, my guy. कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये डील को जाने दें? नहीं, आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब आप लोग हो गया है, हम लोग से आप लोग। You know, to separate himself a little bit. आप कमीशन पे काम करते हैं? क्या? तो कमीशन वाले की तरह बात करें। क्या बोला सर? Hey. क्या बोला सर? Yeah, he pretty much said, know your role, my guy. अरे मैं मदद कर रहा हूँ और ये बैठा हुआ मेरे सर पे मुत रहा है। झाड़ भर का भरोसा नहीं है। देखो कहाँ जा रहा है, पता लगा। और महेंद्र को बताने की जरूरत नहीं। All right, young man. I mean, at least he's trying to act the part, you know. He definitely, you know, he carries a swagger about him. I'll give him that. आप हमारी तरफ है ना? आप हमारी तरफ है कि नहीं? क्या बोल रहे हो छोटू? Like them old heads say, what is it, get down or lay down? Oh, yeah, that's right. Yeah, they wrote all on the wall. She's just trying to be a good student. Y'all took it too far. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस साथ में चले क्या? So intrigued. He's so cruel. So confusing being a kid. Trying to figure it out. अरे बताया नहीं कभी कि तुम्हारा छोटा भाई भी है? अरे अपना साला तो छोटा हीरो लगता है। जो ये सब रोज होता है। तुम अपने पापा को क्यों नहीं बता? What? Bro, you was a part of it. I'm sorry, मैंने तुम्हारा बैज ले लिया। अरे फर्स्ट रैंक आई थी तो। She did win it fair and square, though. You're a good boy, Lal Krishna. My true friend in GULAABS. I bet you feel like a dirtbag now a little bit. गांधी साहब सिक। सिक, ठीक है। अरे जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो ले आऊँगा। रोइयो मत। भिंडी नहीं खाता, बैंगन नहीं खाता। मैं हैप्पी हूँ। Steady trying to learn some English. तो इनका जो भी टेस्ट है ना, वो तो फटाफट करा दे। क्या क्या है आपका? वो एक एक्सरे है और कुछ टेस्ट है इसमें लिखे हुए हैं और ये। अरे ये क्या? आप 4-5 एक्सरे कराओ, जो भी है। He said 5 X-rays. I mean, what's the use of having power if you can't use it from time to time? अरे आपके पापा मतलब मेरे पापा ना? मैं काफी टाइम से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। Yeah, now that you're a gangster. अब सब कैसा है? हाँ, अब तो सब ठीक ही है। काफी गैंगबाज हो गए वैसे। हॉस्पिटल तक मेरा ऑप चलता है तुम्हारा। See? That's what it is. She's still holding on to that gangster stuff. Well done, Tipu. I shouldn't be so judgmental about it, because I know वैसे back in the day, there was a lot of young ladies that I was, you know, kind of interested in as a younger man, and they'd rather, you know, talk to the gangster drug dealing kind of type or whatever, because it was the bad boy look, you know. So. टीपू, मुझे जाना चाहिए पापा के पास। ठीक है। I'll see you around. Well, I mean, you know, the stock is rising. You help the pops. अच्छा एक बात बता, ये सी अराउंड का क्या मतलब होता है? समंदर चारों तरफ। Okay. सारा माल चेक करो और देखो कितना अफीम उगता है यहाँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सालों से हम खेती कर रहे हैं और इस तरह से मुंह उठा के यहाँ रेड नहीं मार सकते। Like I'm the police. I can do whatever I want. और तुम पूरे 100 एकड़ पे अफीम उगा रहे हो और सवाल उल्टा हमसे कर रहे हो। तुम्हें पता भी है ये क्या कर रहे हो? ये सब गांची साहब के लिए। Oh, he said it out loud. सब सीज करके फैक्ट्री पहुंचाओ और राम प्रसाद एक गार्ड ड्यूटी पे लगाओ। जैसे ही बाकी की फसल रेडी हो वो भी सीज करना। Dang. अफीम का के साथ? अरे कोई भी हो,
हमारे डिपार्टमेंट का पूरा टर्नओवर ना इन्हीं किसानों से आता है और तुम इन्हें परेशान कर रहे हो और बिना वारंट के ना तुम उसके लिए पुलिस परमिशन लगती है ना डिपार्टमेंट का और ये डिपार्टमेंट मेरे अंडर में है। एक्शन के लिए गए थे सर, वहां जाके पता चला इट्स ऑल इलीगल, इसीलिए अरेस्ट करना पड़ा। ये दिल्ली या कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ के अपने तौर तरीके हैं। Oh, this conflict is gonna get juicy. तो अपनी Not for your own safety? Wow. Think about your family. That's as real of a threat as it gets. सर जी जो माल जब्त किए हैं भी काफी कीमती नहीं हुआ है। Gotta make them sweat. हाय तुम यहाँ आते हो बुक्स लेने? हाँ दिस इज द बेस्ट शॉप इन जीजी आई एम रीडिंग Oh. द फाउंटेन हेड ओह, तुम्हें आयरन मैन पसंद है? Oh, yeah, she already knows that. Ooh. आयरन मैन is a female author. ओह और तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी तो तुम्हें लगा कि मेल ही होगा, है ना? नहीं ऐसा नहीं है सो व्हाट आर यू टेकिंग What is that? The fan club. Oh, that looks spicy. लेकिन किस्मत देखो गाजी साहब छत्ती से खुद ही लुढ़क गए। He over here talking to the enemy. मतलब मैं सुकांतो के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर रहा हूँ। Wow. He's gonna set him up with the supplier? मेरी भी तो सिरदर्दी है। Because he was disrespected. That's why. तो मेरा गला पकड़ेगा कि कैसी पार्टी के साथ। Yup. बड़ा खेल खेलना चाहते थे ना तो अब खेलो बड़ा खेल। मिलो सुकांतो से, बात करो उससे, बनाओ। Wow. डन। Hey, but remember Jugnu sent his goons to follow him. अरे वाह, तूने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दी? हाँ तो तू लाइब्रेरी कब से जाने लग गया भाई? किसी ने जादू वादू कर दिया? Blow the spot up, sis. यही कि ये इंग्लिश नॉवेल्स क्यों पढ़ी जा रही हैं? वो दिल्ली वाली लड़की का चक्कर है ना? क्या हुआ, दोस्ती हो गई? एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। Is that true? A guy and a girl can never be just friends? Okay. All right. It's taking a step in the right direction. बोल के भी तो गिर सकते थे। कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ नहीं। अख्तर के यहाँ से बहुत बड़ी सप्लाई आती थी। I was looking at the hole in the stairs. बात की है उसने 2-3 बार, पर साला समझ ही नहीं रहा। अख्तर को छोड़ दिया, माल नहीं छोड़ा। लगता है उसे खुद जाके समझाना पड़ेगा कि वो किससे उलझ रहा है। Messing with cops directly? जैसे आपने बोला था, मैं भी एसपी मिश्रा का पीछा करने गया था। हाँ। वो साला नबीद से मिलने गया। Yup. साला नमक हराम नबीद। What you gonna do, young one? Yo, he took that shot like an old head, didn't he? तुम ये डिलीवरी टाइम पे कर पाओगे कि? Oh, that's the Shakur dude. Okay. Yeah. तो कन्विंस करो कि इतना बड़ा डील हम तुम्हें क्यों? I mean, that is a good point. It's like, yo, you inheriting somebody else's burden. शुरुआत तो मैंने बहुत छोटे से ही की थी, लेकिन वो वक्त अब चला गया सुखंत साहब। शेरपुर की सारी हफीम आज मेरी मुट्ठी में। काची साहब तो अब रहे नहीं, और काची साहब के बिना गुलाबगंज मतलब बस एक मरा हुआ हाथी है। गांधी साहब कोमा में मरे नहीं है। Oh, is this an unexpected? Yup. I'm surprised bullets aren't flying. Hey, कर नीचे कर। So you thought you could do this meeting without me being here? महेंद्र भाई, सब खैरियत? ठीक है। छोटू अब जवान हो गया। ये जब बहुत छोटा था, मैं इसे गोद में लेके घूमता था। I used to carry him around. बड़ा बनने की बड़ी जल्दी है, हाँ नबीद? आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। मैं यहाँ अपने आप से नहीं आया हूँ, बुलाया था। एसपी You even said his name. सेरा बोल रहे थे ना, मैं तभी समझ गया था। जो जहाँ बिस्किट फेंकता है वहीं पूछ हिलाते हो। You wag your tail for anybody throwing a biscuit.
बीएनई तुम्हारे सारे बड़े बड़े किसानों को खेत में रेड मार रहा है। ऑनेस्टली मुझे अब नहीं लग रहा है कि तुम टाइमली डिलीवरी कर पाओगे। तो क्या चाहते हैं आप? एक साथ मिलकर काम करो। Oh, work together? बात कर रहे हैं आप सुकांत बाबू। भाई साहब होते कभी इस बात के लिए राजी नहीं होते। नहीं तो फिर नहीं, लेकिन तुम दोनों ही पार्टी अकेला ये काम नहीं कर सकते। He does have a point there. मुंह उठा के डील से पीछे नहीं हट सकते हो। काम करने का कोई तरीका होता है कि नहीं? अच्छा। He said that out loud in front of everybody. तुम मेरे साथ क्या हुआ? अरे आओ तो सही। Hey, come here, Junior. Let me talk to you for a second. let me tell you what's what real quick. You ever disrespect me in front of all these people again? हाँ, ये क्या आपके और पापा के बीच में डील थे? नहीं, वो नहीं। उसके बाद दूसरा जो बोल रहे थे। क्या? हाँ, के काम करने का एक तरीका होता है। Yeah, I mean, what you think was gonna happen? वरना हम तुम्हें दिखाएंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत पका चलेगा। Rein it in, tough guy. गांची और एसपी साहब को तो हम पहले नाराज कर चुके हैं। अब नवीद के इलाके में रेड मारकर हम उससे भी नाराजगी मोल ले लेंगे। तो उस गांची ने अकेले कोई पाप किया है क्या? नवीद को क्यों छोड़े? Oh, he going after the beat stuff too? देखो भैया, आप ये गलत कर रहे हैं। बिना वारंट आपने ऐसे कैसे छापा मार दिया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किसके खेत में खड़े हो। I know exactly whose farm it is. चल बता। या सब अकड़ में हर कोई अपना माई बाप लेके घूम रहा है। नाटक बंद कर, वरना अभी अरेस्ट करके अंदर डाल दूंगा। See, I don't care who your godfather is. अबे इसकी माँ का। गरम है। वो देख। अबे वो नहीं, वहाँ। नवीद के कुत्ते को। चुपचाप चाय पीना। वैसे बड़ा तुझे कोई पहचानता है। निकल रहे। चाय? अबे साले चाय पीने हैं, आत्माराम को ढूंढने। चल। So they deep behind enemy lines. अरे यहाँ दिन भर में बहुत आते हैं, मुझे कुछ याद नहीं। इन्हें कुछ नहीं पता। चल। कातू देखा क्या? फिर लंबे बाल ऐसे बम्बई से आए। नहीं सर, नहीं देखे। I mean, that's a really vague description. Get out! गलत कर रहा है साहब। गलत कर रहा है, गुलाबगंज वाला नहीं है। Ooh, he looked him dead in his eye. सर एक बात बतानी है। He's like, are we safe? मुझे खबर मिली है। कलकत्ता का सुकांतो गुलाबगंज आया है। The big guy. But I'm sure you need all kinds of like paperwork to arrest the big guy. You think he's हाथ में खरबूजा है। think he's crazy enough to go after him right now? खरबूजा है। अब इस खरबूजे को मैं गायब करके दिखाऊंगा, देखो। Hey, I remember him. ये खरबूजा तो मेरे पास आ गया। मेहरबान कदरदान, इस शहर की कदरदानी के, आप लोगों की मेहरबानी के चर्चे में। अपना मफलर तो हटाओ, I can't see face. Boy face look you. अब देख। खिरसू के आदमखोर शेर के बारे में सुना है? Man, he lying, huh? दुर्लभ ताबीज। Yep. ये नाखून उसी आदमखोर शेर का है। Yeah. तुम्हारी रक्षा करेगा। His hustle is strong. इसको मैंने कहीं देखा है। मुझे? हाँ तू। हो ही नहीं सकता। मैं तो अंबाले से हूँ ना। कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता। अंबाला? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? My man's packing his stuff up. दोनों मफलर निकालो, जल्दी। अरे आप लोग खेल देखो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम चले जाते हैं आराम से। हम चले जाएंगे। अबे ये तो वही है साला गुलाबगंज। Oh. Woo! Even the dog running. He said, yo, you should have bought it. No, the price is double. Whoa. My man just looking off random shots, huh? Whoa, that's stunt, bro. Let's go. We out. Oh, what happened to his gun? Ah. All right, we got a nice little motorcycle chase going on. My man hit him with his belt. Yo, my man, yo, he's actually doing his own stunts too. That's crazy. Good for you, my guy.
He said, shoot back, you idiot. Oh my gosh. What a great stunt that was. That was good. You run out of gas. Wow. Oh, wait. My man over here trying to scoot the bike. He trying to scoot. Wow. Ah. Should have brought the ambulance. अर्जुन वर्मा I know. आप वो है जो इस पूरे इलाके में Oh, I know who you are. Look at these shots. These are great. हम तो बस यहाँ से निकल रहा था मुझे नहीं पता था कलकत्ता से गुलाबगंज इतना नजदीक है अब चाहते क्या है मिस्टर Every time he put his hand in his pocket, something crazy about to come out his dude's mouth. मेरी नाक के नीचे यहाँ के लोग कई टन अफीम इलीगली उगा के बेचें तो मैं चुपचाप तमाशा नहीं देख सकता हम समझ सकते हैं अब ड्यूटी वाला आदमी है ईमानदारी से अपना ड्यूटी करना चाहता है बट I'll tell you one thing मिस्टर What's that? In my experience हर किसी का ईमानदारी का एक कीमत होता है मोल होता है आपका कीमत चुकाने के लिए Everybody trying to buy you, man. ऑफर अच्छा है but I'm not interested. Let me tell you something, Mr. Sukanto. Oh, let me tell you something. जितना माल आपको चाहिए वो इस नबीद और गांची के बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है जिसके अंदर यहाँ का सारा अफीम है Wait a minute. आपको जितना माल चाहिए मैं डिलीवर Word? No. What? Oh, come on. Wow. Arjun making moves? Well, I mean, he does have all of the work. He got all the supply. Wow. When the police become gangsters. Still on boss's guard duty, huh? Wait a minute. Oh, he pulled him back. Yup. Oh, we're done. If you're watching this on YouTube, you're gonna see a cut down version of our reaction because we're only allowed to show you a limited amount of picture in picture. But if you wanna watch the whole thing with us uncut, uninterrupted, head over to our Patreon page at patreon.com/Sintel. Become a member of this channel. You'll get access to the full uncut reaction, but you will need your own Netflix, HBO Max, or Disney Plus subscription so you can open up each episode in an adjacent window to our reaction. We'll give you a little time with a small reference video at the bottom of the screen to help you sync up the footage. And it'll be like you're watching it with your favorite pals from the internet. What'd y'all think of that episode? Okay, it was a lot to unpack on that. I mean, the last episode ended with the youngin who's trying to take the throne. What's his name? Jugnu. Him accidentally killing the doctor, trying to prove that he's the new tough guy. Unbeknownst to him, you know, you're over there jeopardizing your pop's life. But here's the thing, and what's really, you know, creating more of this this craziness that's unfolding is that it created distrust among the people in his ranks, his people, right? So one of his top advisors, well, not advisor, somebody that's a part of the commission that controls all the opium, went behind his back and spoke to the enemy. So spoke to Nabeed. Wow, that's foul. I did like that scene though, because we got a chance to see everybody kind of like look at each other face to face. Speaking of looking at each other face to face, Tipu and Arjun got a chance to meet face to face too at the restaurant where both gangs meet up at. But we'll talk about that a little bit later. Yo, Jugnu is like he carries it a little bit more than I've seen in some of the previous episodes. In some of the previous episodes, he looked like a child kind of doing it. He still does. You know, he's still a kid. He still carries him such a little bit, but there is like a hint of him that has like a piece of seriousness to it. He's so out of pocket and reckless, and that's evident with him even talking to his best friend. He goes over to his best friend's house, pressure's getting to him. He's like, yo, let's go off, play some PlayStation, eat some snacks, you know, but but bring your wife so I can mack her down. Like, that's so disrespectful. I just, that part. And his arrogance finally got the best of him because he talked to a dog that was bigger than him.
and that is the leader of the big gang that's trying to get all of it together. He pulled him off to the side and was like, "Hey, young man, let me tell you something, bro. Don't ever disrespect me like that in front of my people." And then had his goon give him the gut punch. Oh man, yeah, he needed to be kind of like be put in his place, because I don't think he's been put in his place since he's gotten, kind of like the throne. And now that we got this big reveal in the end that his dad is probably going to be waking up and probably going to be taking control. We don't know how that looks, right? Because just because you come out of a coma doesn't mean you're ready to lead, because you still got to bounce back, recover, all that other stuff. So, but it is a cool thing to have like in the background, like this big issue that Jugnu's got to try to figure out. But the biggest surprise of all, hands down, is Arjun. Arjun over here making moves, seizing both sides of the field, storing all the opium, and then not even necessarily recording it off, right? Recording and sending it up to higher ups. So nobody knows about the opium but him. His subordinate, or it was actually not a subordinate, the guy that works with him, he told him, was like, he told him, he was like, "Yo, I sent it over to the main headquarters." And got him believing that. So there's like no paper trail for all of this opium that he has. And come to find out that he is trying to get into the biz himself. I don't believe that he's gone full blown, I want to be a drug dealer just yet. I feel like there's something else attached to it, some other hook, in order to blow up the whole organization. But right now it's good. It's spicy. I want to see how all of this unfolds. It makes you cast doubt. I mean, we got doubt on him anyways, because, of the incident with him and the other lady and the pictures, and, he's a married man. So we've got that doubt, that seed of doubt to start everything off with. And then to go back to like the innocent side, and we got the kids and Arjun's daughter who's being bullied with the drawing, with the graffiti that's on the wall, and the young man over here trying to, be there for her, even though he was one of the people that put her in that position. It's so crazy that we have all of this stuff going on, and then we have like the story with these little kids and their little love trysts between, loving their teacher and making sure you're tough in front of your boys and writing love letters and all that. It's like this other little side story. I know it's gonna all connect, because remember, there's that real big piece of information that kid has that is about Tipu that his dad gave to him, his dying words, and he's refusing to tell him out of jealousy. So I'm assuming that that's probably gonna be like one of the main things that's gonna connect those dots between those two issues. But right now they are very far, very separated. So we got like these three big storylines. We got the kids, we got the storyline of Tipu trying to become a gangster, and then we have the storyline with Arjun and the cop. Well, actually, we got two more storylines as well, and then we have to worry about what's his name, Jugnu, who's trying to like become the new king of the hill. So it's like those four big storylines and how they're intertwining, interweaving with everything. What do you think is so far? It still feels very, and I say this, I always say this with a compliment, because Guy Ritchie is one of my all-time favorite directors. Sorry, there's a bug in there. It feels very Guy Ritchie-ish in some of the way that it's going down, and I love that. I love that. But certainly, it's full-blown Raj and DK. You see this and you already know automatically that it's a Raj and DK project. But I do like a little bit of the hat tips too, some of it. I'm all on board. This has just been tons of fun. I think we're about halfway through the season right about now. I think we're on episode 4 right now, and I believe it's like 8. Let me just double check real quick. There's actually 7, so we're almost a little bit past the halfway point. And then we'll see how they're going to tie all of this up. I hope you're still on board like I am. I hope you've been enjoying this. Let me know what I got right, what I got wrong, and what I missed. But of course, keep that in the context of the episodes that we've already watched, because we don't need any spoilers. So without any further ado, I'm going to catch y'all on the next episode. Love y'all. Peace.